हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो स्टडी रिलेटेड वीडियो मैं आज लाया हूँ आप लोगों के लिए वो बेस्ड है कंप्यूटर के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर जाओगे एग्जाम्स में तो श्योर शॉट कॉमन आएंगे ही आएंगे और अच्छे से लिख भी पाओगे। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझको बताना कैसा लगा वीडियो। चलिए आज का वीडियो शुरू करें। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ओओपी, व्हाट इज़ ओओपी, व्हाट इज़ पीओपी। इनके फीचर्स अच्छे से पढ़ना, डिफरेंस पढ़ना अच्छे से, ये डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, क्लासेस, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा बाइंडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, इनहेरिटेंस और डाटा हाइडिंग, पॉलीमराइजेशन, इनकैप्सुलेशन। why why class is called object factory, what is immutable, compound statement, type promotion, unicode, what are tokens, name 5 tokens, what are escape sequence, define ASCII code, characteristics of JVM, source code, interpreter, JVM and bytecode। जो दूसरे क्वेश्चन है वो है डिफरेंसेस ऑफ सिंगल एंड डबल एंड। सिंगल इज इक्वल टू एंड डबल इज इक्वल टू, डबल ग्रेटर देन, ट्रिपल ग्रेटर देन। इनके डिफिनेशन अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज फिक्स्ड मोड ऑफ इम्प्योर एक्सप्रेशंस, व्हाट इज unary what is binary, unit and ternary operators, what are the differences between int, round, what are the differences between what are the differences between if and switch, if and ternary operators, name for programming constructors, name the element that controls a loop, what is fall through, how to prevent it, what is break statement, differentiate between ordinary and labeled and break along with continue, differentiate between counter and flag, what is prototype, what is signature, what is access specifier, define and call any fall examples, what is modifier, return type, formal arguments, declarations, extended statements, header and footer. So what are the difference between call by value and reference, and what decides its, what are the differences between pure and impure functions, what is function overloading, function prototype, what a constructor, give its properties, show how parameterized constructor is passed values, define values, what are keywords, define differences of constructor and method, what is meant by null reference, what are access specifiers, and define with example, what are static value method, what is stream, name 3 types of error that happens, what are the important of through, and finally exception handling, what name some predefined exception in Java, what are wrapper class, what are exception handling, define shade between equals and compared to, what are packages, why package is important by default, what are abstract class, differentiate between scope and visibility, uses of print writer classes, what is value of an array, name two characteristics of Java programming language। फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को दूसरे डिफिनेशंस भी दूंगा, वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। वो है एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, एरे, बेस क्लास, बाइनरी सर्च, बूलियन लिटरल्स, ब्रेक स्टेटमेंट, बबल सॉर्ट, बफर, बाइट कोड, कैरेक्टर क्लास, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंटिन्यू स्टेटमेंट, compound statement, compiler,
data abstraction, debugging, data handling, default case, default constructor, dynamic binding, encapsulation, expression, implicit and explicit casting, function overloading, function, logical operator, logical or, merging, nested loop, new operator, literals, linear search, library class, JVM, interpreter, instance variable, inheritance, infinite loop, impure function, implicit conversion, new operators, switch, syntax, static, ternary operator, tokens, truth, typecasting, unary operator, protected, public, punctuators, pure function, object, OOP, object code, null void, null loop, null प्राइवेट डाटा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चलिए आज का वीडियो यहाँ पे फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है कि आप लोगों की कंप्यूटर पेपर होगा पूरा 100 मार्क्स में 60 मार्क्स होगा प्रोग्रामिंग के ऊपर और 40 मार्क्स आपको तो फिर लिखना पड़ेगा। तो फिर वो थ्योरी के ऊपर आएगा, आउटपुट निकालना होगा। उनमें से आपको मैंने थ्योरी क्वेश्चंस पूरा दे दिया है। मैंने आप लोगों को पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो दे दिया है और उसको देख लेना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो आउटपुट निकालने के वो प्रोग्राम्स भी दे सकूँ, ताकि आप अच्छे से आउटपुट निकलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो। वो मैथ डॉट जावा डॉट राउंड, वो मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट राउंड, वो आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट में जनाना। थैंक यू।